इस फोन में इतने सारे इंडस्ट्री फर्स्ट्स को OnePlus ने इंकॉर्पोरेट किया है ना, मतलब आई कांट बिलीव कि हाउ एग्जैक्टली इन जस्ट वन जनरेशन इतना सारा नया हमें एक फोन में मिल सकता है. Now the biggest upgrade this year is performance. This is the first phone in India with the Snapdragon 880 Gen 5. The OnePlus 15 to me feels fast, fluid and confident like very few phones have done in the recent past. I've had problems with the iPhone 17 Pro Max and the Pixel lineup as well, which I don't with the OnePlus. OnePlus feels more refined than those phones. And second, first వచ్చేసరికి బ్యాటరీ ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఫ్లాగ్షిప్ లెవెల్లో 7300 mAh बैटरी ఉన్న फोन्स అయితే లేవు. आई थिंक OxygenOS 16 जो है इंडस्ट्री में अभी के लिए हम स्मूथेस्ट UI बोल सकते हैं. परफॉर्मेंस देता है. ये पहला फोन है हमारे स्टूडियो में जो 4 मिलियन के ऊपर अंतुल स्कोर जिसने किया हुआ है. इसमें इंडस्ट्रीज फर्स्ट आपको ऑलवेज ऑन 120 FPS का भी सपोर्ट दिया गया. पिछली बार से हैसलब्लैड की कोलैबोरेशन हटाई है, बट कैमरा पिछली बार से मुझे एक अपग्रेड ही फील हुआ. This is IP66 rated, IP68 rated, and it's IP69 rated, but that's not all. It's even IP69K rated. Here's the most complete IP ratings we have seen. That means it can handle high pressure, high temperature, hot water jets,